Good afternoon everyone. My name is Bhupendra Dallag and today I am going to give presentation on the topic eigenvalue and eigenvectors. So let's begin. First we are going to know what are eigenvalues and eigenvector. Eigenvalues are the special set of scalar values that is associated with the set of linear equation most probably in the matrix equation. The eigenvectors are also termed as characteristic root. It is a non-zero vector that can change at most by its scalar factor after the application of linear transformations. Now, moving to the next, we are going to solve a question on the basis of basic of characteristic roots and eigenvector. इस क्वेश्चन में हम कैरेक्टरिस्टिक रूट और आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक रूट को ही हम आइगन रूट्स कह सकते हैं। So we have given we have given matrix A equals to 5 4 1 2. So moving to the next, the characteristic equation is given by determinant of A minus lambda I equals to 0. Then on the solving or multiplying lambda into invertible matrix I, it get lambda 0 0 lambda. Then on subtracting we get 5 minus lambda 4 1 2 minus lambda equal to 0. Here 0 is a null matrix, so we can write it as a 0. Then on solving the determinant, 5 minus lambda into 2 minus lambda minus 4 equals to 0, we get 10 minus 5 lambda minus 2 lambda plus lambda square minus 4 equals to 0. On solving, we get lambda square minus lambda plus 6 equal to 0. On solving this equation, we get lambda square minus 6 lambda minus lambda plus 6 equal to 0. We can take common lambda here, so lambda बाहर हो जाएगा, लैम इंटू लैम्डा माइनस सिक्स, या -1 बाहर हो जाएगा, -1 lambda minus 6 equal to 0. So lambda minus 1 into lambda minus 6 equal to 0. We get lambda equal to 1, lambda equal to 6. So we get eigenroot that is 1 and 6. So we are going now to find now eigenvector for the characteristic roots 1 and 6. So let X be the matrix that's element are x1 x2, be the given vector for the eigenvalues. ये इसकी जो वैल्यू आएगी वही आइगन वेक्टर होगी ईच आइगन वैल्यू के लिए. So here we take matrix of A minus lambda I into X. X is the matrix whose value is x1 and x2 equal to 0. 0 is a null matrix. Here we can write here. Then we putting all values. Then 5 minus lambda 4 1 2 minus lambda into matrix x1 x2 equal to null matrix 0. Now we are taking for lambda equal to 1. We are going to find eigenvector for lambda equal to 1. Now on putting value lambda equal to 1, here we get 5 minus 1 4 1 2 minus lambda, and बाकी सब जैसा कि वैसा हम लिखेंगे x1 x2 equal to 0 matrix null matrix. Then we get the value on the matrix 4 4 1 1 into matrix x1 x2 equals to 0. Now we are
हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग. देन वी गेट 4x1 प्लस 4x2 इक्वल टू 0. एंड हम इसको इक्वेशन 1 नाम देंगे. एंड x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 हम इसको इक्वेशन सेकंड नाम देंगे. सो x1 इक्वल्स टू हम इसको सॉल्व करेंगे. सो वी गेट x1 इक्वल टू माइनस x2. हम यहाँ -1 को बोथ साइड डिवाइड करेंगे. सो x1 अपॉन -1 इक्वल टू x2 अपॉन -1. सो वी गेट द वैल्यू x1 इक्वल टू -1 एंड x2 इक्वल टू 1. सो हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा इक्वल टू 1 के लिए आइगन वेक्टर मिले हैं -1 and 1. In the same way, we put lambda equal to 6. Then in the matrix 5 minus 6, 4, 1, 2 minus 6 into as it is x1, x2 equals to 0. In this matrix -1, we get -1, 4, 1, -4 into x1, x2 equals to 0. Now again we हम इसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. एंड वी गेट -x प्लस 4x2 इक्वल टू 0. इसे इक्वेशन थर्ड देंगे. एंड x1 माइनस 4x2 इक्वल टू 0 हम इसे इक्वेशन 4 देंगे. Now moving to the next. Then on solving we get on further x1 इक्वल टू 4x2. बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे. देन वी गेट x1 अपॉन 4 इक्वल टू x2 अपॉन 1. So we get the value x1 इक्वल टू 4, x2 इक्वल्स टू 1. तो हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट लैम्डा इक्वल टू 6 के लिए वैल्यू मिली है x1 इक्वल्स टू 4, x2 इक्वल टू 4. So at the end, characteristic roots are 1, 6. Eigenvector for lambda equal to 1 are -1, 1, and for lambda equal to 6, 4 and 1. Thank you very much.